हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं थी जेडा में और मैं श्योर नहीं थी कि मैं व्लॉग करूँगी या नहीं। सो मैं गलती से कपड़े भी नहीं लेके आई थी एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव। सो हम सब क्रू ने डिसाइड किया था कि हम एक पास के सुपरमार्केट में जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले मिले यहाँ पे ब्रेकफास्ट टेबल पे। यहाँ पे हमने किया ब्रेकफास्ट एंड दिस इज़ ऑल आई गॉट फॉर ब्रेकफास्ट। आई हैड सम कॉफ़ी, हैश ब्राउन और जो भी मैंने वहाँ से लिया था। देन हम होटल से निकलने लगे। हमने बुक किया था कैब फॉर दैट सुपर मार्केट। नियर बाय है बट इट टेक्स लाइक गुड 10 to 15 minutes. दिस इज़ हाउ द सुपर मार्केट लुक्स. इट इज़ वेरी ह्यूज एंड इट हैज़ एवरीथिंग पॉसिबल. यहाँ पे घर के बेसिक सामान से लेके गिफ्टिंग एंड स्टेशनरी से लेके सब कुछ मिलता है. देन इट हैज़ सेपरेट फूड सेक्शन जहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली थी. उसको लेने के बाद आई वेंट फॉर द फ्रूट सेक्शन जहाँ से मैंने मैंगो लिए थे घर के लिए. और मैंने अपने लिए एक मैंगो शेक भी बनवाया था जो मैं बालकनी के पास बैठ के थोड़ा रिलैक्स करते टाइम पी रही थी. फिर किया मैंने अपना बैग पैक बिकॉज़ फ़्लाइट के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने ऑलरेडी पैकिंग कर ली थी. I'll just sleep for some time because it's 2 p.m. here and हमें निकलना है around 10 o'clock at night. So I might just take some rest and see you guys on the way. Also, I'll show you what all I got once I reach Mumbai. So till then, bye bye. Hi guys, so this is few days after I came from Jeddah and now I'll be showing you what all I got because this is my favorite session. There's a lot of things that I got. Quite heavy. The store I went, वहाँ पे हर चीज़ 5 रियाल में मिलती है which is like 105 Indian rupees. So हर एक का प्राइस सेम है, 5 रियाल everything. So the first thing is this flower vase जो मैं वहाँ से लेके आई हूँ and I love this. This is my second most favorite. First I will show you. So ये मैं एक टेबल के लिए लाई थी which apparently did not get delivered. So हम इसके लिए अब टेबल खरीदेंगे. And with this vase I also got this fake flower. मैं fake flowers लेके आई हूँ so that I can actually. That's so cute. The next thing is this set of 3 ka clip which I got for my mom. Next is this sponge. It's in a set of 8. So इसके ये makeup remover kind of है. You can put your micellar water in this and wipe your makeup off. And you can also use it for the mask, the cream mask that you put. You just soak water and squeeze it and you can remove your entire face mask. So the next thing is Johnson's baby cream. ये मैं 2 लेके आई हूँ because one is for my niece and the other one is for me. Because ये cream actually बहुत ही buttery, बहुत ही अच्छे से settle होता है face पे. Another cream which is also in a pack of 2 because ये वाला cream ना Dove का ये इंडिया में नहीं मिलता है. So and this is I kid you not, this is so good. If you ever go out of India and you find this cream, just buy them. Just buy them because they are so good. मैंने एक बड़ा वाला बॉक्स लिया था इसका पहले and I completely used it because it is that good. This lotion, the other variant that I got last time and this is like very basic body moisturizer with a good pricing. So ये इसलिए मैंने उठा लिया. Then of course honey. I have an obsession with honey. मतलब मैं जहाँ जाती हूँ I don't know why I feel like buying honey. मैं फुकेत से भी हनी लेके आई, उसके पहले भी मैं सऊदी से लेके आई थी. Then again I got honey. And they have the purest honey also. यहाँ पे बहुत mix वाला मिलता है. So I like that better. I got some dates. And a packet. Mostly मैं 2 ऐसे लेके आई हूँ पैकेट में. So dates for Dada. So उनको dates पसंद है. So I got it for him. And then this perfume. This is like a roll वाला perfume. I'll open it. ये मैंने वहाँ पे ट्राई करा था. So I actually like the smell a lot. I love opening things. Toothberry flavor, like it smells like fruit. Ooh, smells so good, like actual fruit, some sweet fruit wala smell, so good.
Then I got this underarm roll-ons. I also have obsession with underarm roll-ons, so I got two from there. ये individually 105 का. Then I found this foot cream. So recently I am facing थोड़ा सा cracked heels, तो उसके लिए I got some feet cream. And there's another perfume, but not for me this time. Kids perfume actually, and it smells so good. It smells like a baby. The packaging is so cute. Do a show it. The packaging itself is so attractive, and I bought it for the packaging, but it actually smells so good. ये मेरी नीस ने अभी तक देखा नहीं है, मैं इतना कुछ लेके आई हूँ, अदरवाइज मुझे वीडियो भी बनाने नहीं पता. She would have snatched everything. The cutest thing I have ever bought, I think. This is a sleeping puppy. It's not visible. See. So cute. I also got it to keep it on that table, but apparently nahi aaya. But then I got some chocolate. This is dark chocolate, and this is like a biscuit. It has dates inside the biscuit, so I got it for my dad just for him to try, and let's see how it is. And I bought this biscuit, and I thought ये एक individual pack है 5 रियल का, but it was on offer, तो मुझे 4 मिले. I got 4, and this is for 100 rupees of course. So ये मुझे 4 मिल गए बड़े बड़े पैकेट्स. So I'm so happy. वहाँ पे ना स्टेशनरी बहुत अच्छी मिलती है, लाइक बच्चों के सामान. सो आई गॉट दिस पेंसिल बॉक्स जिसमें इतने सारे पेंसिल हैं, एंड दिस इज जस्ट फॉर 5 रियल. लाइक, एंड देन आई ऑल्सो गॉट द स्केच पेन्स, एंड अपेरेंटली दिस हैज़ कम इन पैक ऑफ 2, which is a great deal, guys. Just 100 rupees में 2. Well, that too the big size, not even the small ones. This is the big size of the sketch pens. Then I also got this Johnson's Blue. I love this powder. It smells so good. I got it for my niece, so I have also got it in a pack of 2. एक उसने already ले लिया है, एक मेरे पास है, which I might not give it to her, but I might also give it to her. Let's see. Depends. Then my mom likes this. This is like धूप बत्ती. ये उनका धूप बत्ती, बट गाइस दिस स्मेल्स सो गुड. मतलब इफ़ यू जस्ट लाइट इट इन द मॉर्निंग, द एंटायर डे योर हाउस विल स्मेल लाइक दिस, एंड दिस हैज़ अमेजिंग स्मेल. और इसमें ये वाला मस्क वाला वेरिएंट इज़ सो गुड. एंड आई ऑल्सो गॉट द समर वाला वेरिएंट, बट आई हैव नॉट ट्राइड दिस, बट दिस वन इज़ अमेजिंग. Thing is this box of eraser, because ये स्कूल में बहुत सारा छोड़ के आते हैं, so I actually got the डब्बा for her, and you can use the डब्बा also later अगर ये ख़त्म हो जाता है, तो it's very convenient to store it. Then this would be the last thing. This is like you might have seen a lot of ad on Instagram where you just rub it on your area where you have hair, and it reduces, like it magically erases all the hair. So it is that. I'll just show you. I can't show you the demo, there's no hair at the moment. So this is how it looks. There's some blade kind of thing on this, so you just rub it on the area where you have hair, and it magically disappears everything. My crew suggested this to me, so I was like, okay, I'll just buy and try it myself. So yeah, that's it for this video and the vlog that I have been shooting, and thank you for being till the end of this video. If you liked it, please do like, share and subscribe to my channel. I'll see you in the next one. Bye bye.